We are going to learn today, we are going to make a comparison of trauma care, and parameters of comparison would be cost, structured management, outcomes, that is morbidity and mortality. On these three parameters, we are going to discuss trauma management in first world countries and third world countries. So, starting from USA straight away, the cost, first parameter. Look at the staggering figure of $4 trillion. These are the figures of 2020 being spent on healthcare, of which $1.24 trillion are being spent on hospital services. $1 trillion, not billion. They say that the costs per day are so high that 60 to 65% of all bankruptcies are related to medical expenses, which is so expensive, sir, that the bankruptcy is 60 to 65% healthcare. Don't forget this President Joe Biden's story. He didn't have money to bear the cost of his ailing son. He could not pay the medical expenses. So what did Barack Obama do? He gave him the money. He did not take from the public exchequer. A story known by all over the world now. Now in USA, if you just look at this picture, falls are one of the major causes of trauma in elderly. Every 11 seconds there is a fall. About 800,000 admissions due to falls. Now, what is the structured management in program in America? They have designated trauma center levels. Trauma categories vary from state to state, and if I go through quickly, what is level 1 trauma care center? The elements of level 1 trauma centers include 24-hour in-house coverage by general surgeon. 24 hours in-house coverage. That means कि trauma level 1 center जो होगा, उसके अंदर ये facilities होंगी. Okay, that center 24 hours should have orthopedic, surgery, neurosurgery, anesthesia, emergency, radiology, general, plastic, oral and maxillofacial surgery, pediatric and critical care departments running 24 hours. Referral resource for communities in nearby regions, and this referral is through air ambulance also. Provides leadership in prevention, public education, provides continuing education of trauma team members, incorporates a comprehensive quality assessment program, operates an organized teaching and research effort to help direct new innovations in trauma care. Program for substance abuse screening and patient intervention meets minimum requirement for annual volume of severely injured patients. This is level 1 trauma care in US. This is level 2. If level 2 sir, if I go on sir, बहुत लंबा हो जाएगा. इसको मैं skip कर रहा हूँ सर. फिर then level 3, level 4, level 5 पे आ जाते हैं. Now this is where our BHUs come in. Basic emergency department facilities to implement ATS restaurants. Remember, level 5 is equivalent to our BHU or a dispensary run at the periphery. But this should meet these requirements. Available trauma nurses and physicians upon patient arrival. After hours activation protocols in facilities not open 24 hours. आपको पता है ना जॉन स्टाइनर था, जब उसकी इंजरी हुई थी तो जिस अस्पताल में उसको लेके गए थे ना नेब्रास्का कॉर्नफील्ड पे उठा के, वो अस्पताल बंद था. डॉक्टर को बुलाया गया. ही ओपनड अप द हॉस्पिटल बट ओनली टू फाइंड आउट कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे. May provide surgery and critical services if available. Has developed transfer agreements, but this is level 5 trauma care. Now look at the mortality after spending $1.24 trillion having all structured management. All intentional, unintentional death injuries, look at it, per 100,000 population is 52.7. Unintentional fall deaths, 12 per 100,000 population, and motor vehicle traffic deaths, 11.5 per 100,000. Now let's straight away, because lecture gets too prolonged if I go into every detail, let's go to Canada straight away.
Look at the staggering cost. $26.796 million being spent on trauma management in Canada. Structured management program, yes, like America, they have 5 levels of trauma care. Level 1, 2, 3, 4, 5. Outcomes and mortalities. This actually, Canada is a very huge country. Mortalities vary from state to state, but they range from 7% to 14.2% per 100,000 population का ये भी figure है. But this sir average हमें नहीं मिली कहीं पे. Let's go to UK straight away. Now look at in UK they have been very, very, very clever. They broke down the cost management to the level of क्योंकि अगर एक मरीज पर मिनट एम्बुलेंस की कॉस्ट ये देखें 5.50 पाउंड पर मिनट. ये हमारे पीएम की भी कैलकुलेट हुई थी, उन्होंने भी की हुई है. ये इन्होंने 5.50 पाउंड पर मिनट से शुरू हैं और हेलीकॉप्टर कॉस्ट करता है 16.50 यूएस पाउंड ब्रिटिश पाउंड मीन कॉस्ट पर पेशेंट पर जर्नी. यानी दे एक्चुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग, मेरे पास लिस्ट है, इतनी लंबी है कि मैं हैरान रह गया अब जब मैंने नेट से ये सारी चीज़ें डाउनलोड की कि मैं आपको बताऊं. ये फिगर्स भी दिए, ये सारा कुछ. मैं आपको ये आखिरी स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जस्ट टू मेक इट शॉर्ट स्किप करके कि जो कॉस्ट है टोटल वो 14 करोड़ 83 लाख पाउंड पर year है, and over a third of this cost is attributed to people age above 65. Look at the cost. छोड़ दे सारी बातें, just total cost देखिए. हम बात करते हैं ना कि हमारा हेल्थ सिस्टम नाकाम है. मैं आपको फिगर्स इसलिए आज पढ़ा रहा हूँ ये सारे कि आप देखें तो सही उधर क्या मिल रहा है 3 मुल्कों में, और मैं आपको बताऊंगा आगे फिगर्स करूँगा. स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट ऐसे लेवल 1, 2, 3, 4 नहीं है यूके में डिजाइन, बट सर दे हैव अ वेरी गुड लोकल रेफरल सिस्टम, उनका लोकल हॉस्पिटल सिस्टम, लोकल काउंटी सिस्टम उनका, लेकिन उनके लिए डेजिग्नेटेड ट्रामा लेवल नहीं है सर, जैसे अमेरिका और कनाडा. कम टू आवर लवली कंट्री पाकिस्तान. Trauma and Pakistan, they go hand in hand since the creation. Now, if you look at this picture taken in 19 September, अगस्त के बाद सितंबर आता है. Look at the people traveling at the creation of Pakistan. But I want to show you a picture 1 year before the creation of Pakistan. Look at this Bombay bomb blast. We are basically addicted to these kind of tragedies. Bomb blasts, earthquakes, floods, natural disasters, trauma. I mean, trauma and subcontinent, they are synonymous, I would say. So what about the structure? We'll discuss cost in the end. Do we have a structured management? Pakistan has no trauma registry on a national level. What a disaster. 75th year हमारी creation को जा रहा है. And surprisingly, look at it. Look at it. Pre-hospital management, जिसमें आती है emergency medical service, जिसमें ambulance service part and parcel है. We have got one of the best in the world. मेरे जितने अगले फिगर आने हैं, कैन यू इमेजिन, मैंने रेस्क्यू 1122 सुना. इमेजिन कि अब्दुल सत्तार ईदी की एम्बुलेंस सर्विस लार्जेस्ट इन एशिया है. इवन इन कोविड डेज व्हाट डिड वी ऑफर टू इंडिया? कैन समबडी टेल मी? एम्बुलेंस सर्विस. कितनी एम्बुलेंसेस? 300. अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे ने इंडिया को कहा कि इजाजत दो तो 300 एम्बुलेंस ही हम तुम्हें दे देते हैं. नहीं सर, दे डिड नॉट एक्सेप्टेड. उनकी सर माइट इतनी ज्यादा, ईगो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो मर गए, लेकिन उन्होंने अजीब वैसे. कैन वी हैव ईदी एयर एम्बुलेंस विद एयर? इनके पास चॉपर भी है. ईदी एयर एम्बुलेंस के पास डॉक्टर सिस्टम है, जो अभी गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया ना 3 दिन पहले कि हम 10 चॉपर्स ले रहे हैं. एम्बुलेंस सर्विस ईदी के पास है, बट वो विद इन द कंट्री आई थिंक उसके लिए.
Now comes the rescue 112 response. I give credit this to Sir Chaudhry Parvez Ali. In 2006, I mean, I should not feel hesitant in praising somebody, even if I don't have a personal liking for it. But yes, this guy deserves an applause. This was the person. Let's give him a clap. की तारीफ बनती है जो ये तोहफा उन्होंने हमें दिया रेस्क्यू 112 का. Imagine the response time in city 6 minutes. 2 to 6 minutes में ये एम्बुलेंस सर्विस पहुंचती है. आप करके देखिए, ठीक है. वंडरफुल चीज है. और आगे हम चलते हैं. अब आप ये समरी ऑफ ट्रॉमा विक्टिम्स अराइविंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रिपोर्ट डेट कहां से? 2013 से 21 तक की मैंने लिखी है सारी. नाउ जस्ट इमेजिन द फर्स्ट फिगर. ये मुझे एम्बुलेंस सर्विस क्या बता रही है, जो कि उनका डाटा है अबाउट डिस्क्रिप्शन अबाउट पेशेंट, जो ब्रेकअप करके मुझे बताया जा रहा है. सबसे पहले जो उन्होंने मुझे चीज बताई है वो देखें. एज रेंज क्या हुई? 21 से 30. मैंने आपको कहा था याद रखिएगा, मैं अमेरिकन का फिगर दे रहा हूँ. उनकी 5 से 29 साल की. याद है? ये देखें, हमारा भी वही एज ग्रुप है, बट दे आर स्पेंडिंग $1.24 ट्रिलियन इन हॉस्पिटल्स, टोटल हेल्थ केयर का. एंड अभी आपको अपना पाकिस्तानी फिगर मैं देता हूँ. आइए लुक एट इट. मंथली इनकम गरीब लोग जो अस्पतालों में पेशेंट इन्होंने ट्रांसफर किए 8 सालों में, वो नंबर देखें. 18,81,000 मरीज ट्रांसफर किया. उसमें देखें 67% कौन से? 15,000 रुपया कमाने वाले मिलेंगे, गरीब लोग. फिर एजुकेशन देखें, इलिटरेट 35.8 पर हाईएस्ट नंबर. ये देखें पार्ट ऑफ डे, सुबह के टाइम बेचारे मजदूरी करने निकले एक्सीडेंट्स पे. ये देखें टाइम ऑफ द डे. रोड ट्रैफिक्स, फिर बाइक जाके बजा, रोड क्रैश, देन व्हीकल ऑफ विक्टिम. जब यानी ये जो कोई गाड़ी जाके हिट की, सबसे हाईएस्ट नंबर 83% बाइक ये थे, ये मोटरसाइकिल वाले. एंड अगला फिगर देखिए अगेन, जाग एक्सीडेंट विद अ व्हीकल, किसी व्हीकल को मारा, किस व्हीकल ने? वो भी बाइक ही था. ठीक है. अब टाइप ऑफ इंजरी इसको छोड़ दें. एम्बुलेंस फर्स्ट एड जो की 48% वो एम्बुलेंस में मिली. अब हम आगे आ जाते हैं. देखें इसमें ड्यूरेशन जो इन्होंने दी है, इसको मैंने आपको बता दिया 6 मिनट. अगली आखिरी स्लाइड देखें कि 50% ऑफ द पीपल ऑफ ट्रामा रीचिंग द हॉस्पिटल्स वर थ्रू रेस्क्यू 112. तो चौधरी परवेज अली साहब को क्यों ना हम शाबाश दें, क्यों ना दें कि अगर आधे से ज्यादा पुलिस जो आपके सरकारी अस्पताल पाकिस्तान पंजाब के पूरे, वो रेस्क्यू 112 ट्रांसफर था. जस्ट वन एम्बुलेंस सर्विस. एंड लुक एट इट. ये ट्रीटेड एंड डिस्चार्ज 62 और सेटिस्फैक्शन लेवल है, इस पे और करें. और क्यों ना हो. एक्सीलेंट दिया है 65% लोगों ने, 34% ने इसको गुड कहा है. एंड लुक एट द एंड. मेरा ख्याल में ये वाहिद सरकारी अदारा है जिसमें डिससेटिस्फैक्शन लेवल 0.01%. Isn't it wonderful? Apart from this registry, I could not find any authentic source of figures to quote here कि जी ये नेशनल लेवल का ट्रामा सेंटर है, ये बनाना है, ये कुछ. सिंध गवर्नमेंट ने ट्रामा सेंटर बनाने की कोशिश की है. सर वो अभी तक बन ही रहा है, मेरा ख्याल है. ये शायद बन गया, अब कुछ उसका देखो 8 years. Now हमारे मुल्क में मैं I would not justify my lecture today if I don't mention the type of traumas that natural disasters that we have. If you look at natural disasters, look at the तीन ही हैं. Natural disasters, floods and earthquakes. तो देखिए ये 2009, 2092 ये जितने मुझे पिक्चरें मिली मैं लगाता गया हूँ. Look at the catastrophe. Even in COVID-19 2020 में कराची का फ्लैश फ्लड 1 सेंचुरी में इतनी बारिश नहीं हुई, 1 दिन में हो गई. और वो पूरे का पूरा कराची इस तरह डूबा कि लोगों ने हेडलॉन्ग डाइव्स किए चौकों में. चौक में इतना पानी था कि बिल्डिंग के ऊपर से उन्होंने हेडलाइन डाइव की. फ्लैश फ्लड था, तबाही फिर गई. अर्थक्वेक्स
اگر ارتھ کویکس کو دیکھیں میں یہ نیچے فگر پڑے سب سے پہلے کہ مشہور و معروف کوئٹہ کا بم بلاسٹ ہے وہ ارتھ کویک ہے 1945 میں جو کوئٹہ کا کوئی رہائشی ہے اس کے بزرگ بتاتے ہوں گے پورا کوئٹہ تباہ ہو گیا لیکن جو ڈاکومنٹڈ 8.1 اس کا تھا وہ لیکن یہ دیکھیں ڈیتھ کا جو کوٹڈ فگر ہے کتنا تھوڑا یہ غلط ہے وی ڈونٹ بلیو اٹ سینکڑوں ہزاروں بندے مرے تھے اس میں اور 2005 کا زلزلہ دیکھیں آگے ہے 2005 کے زلزلے میں جو ڈیتھس انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے یہ بھی غلط ہے یہ 86,000 کیونکہ میں زلزلے میں تھا 2005 میں خود ایکٹیو رول پلے کیا مجھے اشرف سیما صاحب کی اجازت سے انہیں دنوں میں میں چلا گیا تھا اور ہم نے 250 آپریشن میں نے تمبو میں کیے تھے آپریشن تو یہ غلط فگر ہے یہ کم سے کم 1.5 لاکھ آدمی ہوا تھا اور تقریباً 5 لاکھ کے قریب وہ بڑی ایڈ آئی تھی پر آج تک اس میں شرط کا دور تک کچھ پتہ نہیں تھا لک ایٹ دیز پکچرز اسٹل پیپل آر اسٹرگلنگ اگر آپ اس علاقے میں جائیں تو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے لوگ اینڈ دین وی ہیو دس مینس آف ٹیررزم بم بلاسٹ ٹراما کی یہ بگیسٹ سورس 2007 بم بلاسٹ کی میں نے بہت میں دے سکتا تھا لیکن آئی اسٹارٹیڈ فرام دا ریسنٹ ہسٹری دیکھیں یہ کراچی کے بم بلاسٹ یہ واہ بامبنگ میرے گھر سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ 5 کلومیٹر دور 64 پیپل ڈائیڈ ان 1 منٹ ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے لک ایٹ اٹ دس میریٹ ہوتا ہے میرے 2 بھائی اس ہوٹل میں تھے دونوں زخمی ہوئے تھے دونوں بچ گئے اور لک ایٹ دس پشاور بامبنگ لک ایٹ دس مارکیٹ ان لاہور suicide bombing during a volleyball match Lahore massacre then comes the bombs targeted in tribal areas then comes police training center then comes Peshawar and then comes APS a thorn in my heart and in every Pakistani's heart look at this Lahore Park bombing look at Quetta hospital bombing outcomes we have پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف ہے کہ ہم اتنے میسو ٹراما ڈیل کرتے ہیں اور آج تک کوئی نیشنل رجسٹری نہیں ہے ٹراما آئی کین ناٹ کوٹ مائی اون کنٹریز فگرز آئی کوٹڈ یو فرسٹ ورلڈ کنٹریز فگرز آئی could not quote you my country's figures. Now ladies and gentlemen, last part of my today's presentation, the cost. Look at the cost that we are having. $32 per year for a civilian in Pakistan versus $64 per year cost of treatment in these two countries, third world countries. How can we even dream of making a comparison? Per day, trauma patient in ICU in England costs you around £10,000 per day. In USA, in 1 day, $20,000 plus per day for a critically injured patient in the US. And I am spending this much money on trauma care. And must I tell you that this is an unofficial because these are unofficial costs based on surveys. جو سرویز ہوتے ہیں نا پاکستان کو یہ میں نے کاسٹ وہاں سے ڈگ آؤٹ کی ہے. Now global mortality burden 57.7 million were living with limb amputations and look at it 75,850 prostheses per year ان کے لیے چاہیے. ہم نے سر وارڈ میں ایمپوٹیشنس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. آئی ایم کلیکٹنگ ڈیٹا فگرس میں سر اس کو بریک اپ کر رہا ہوں. آئی ول ان شاء اللہ بی بیک ٹو یو سر آئی ول ڈسکس اس کے معاملے بھی آپ کو بتاتے ہیں. اب میں کیا کروں واٹ ٹو ڈو سب کچھ پڑھا پڑھو دیا ہے میرا بھی کوئی فرض بنتا ہے میں بھی اس معاشرے کا ایک ڈاکٹر ہوں ٹھیک ہے میرے پہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو کیا کروں اپنے تئیں سجیشنز تیار کر کے رکھ لوں کہ شاید مجھے کوئی پوچھ لے کہ پروفیسر وسیم صاحب آپ آ گئے ہیں ادھر 31 سال ہو گئے آپ کو بھی ڈاکٹری کرتے ہوئے. آئی اسٹارٹیڈ مائی جاب ان میں ہاؤس جاب کے بیچ میں ہی ایم ہوتا ہوں اینڈ آف دا ہاؤس جاب میں سیدھا GHU چلا گیا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ پلان بنا کے رکھ لیا تھا میں کہ اگر مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا تو یہ اس کا جواب ہوگا کہ فرسٹ چیز کوئی پلاننگ وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں میگنیچیوڈ آئیڈینٹیفائی نہ کریں پرابلم. تو وی شوڈ مینٹین اے ٹراما رجسٹری ایٹ نیشنل اینڈ پروونشل لیول. نمبر 2 improve our road traffic and road structure. Please
People die of road traffic accidents. आप मोटरवे को छोड़ दें, मैंने चलती डाइवू में CPR किया हुआ है कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट का. It took me 25 minutes to call for help. The man survived, अल्लाह का शुक्र. But 25 मिनट माउथ टू माउथ ब्रीदिंग मैंने की. तो इवन मोटरवे का जो ट्रॉमा मैनेजमेंट है, ट्रस्ट मत करना, बिकॉज 64 किलोमीटर का गैप है एक रेस्ट एरिया से दूसरे एरिया. कई एरियाज अभी भी लाहौर मोटरवे के दौरान है. सो वी शुड इम्प्रूव अवर रोड मैनेजमेंट. कॉस्ट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट, ये तीसरा पॉइंट है. ठीक है, खुदा के वास्ते वो $32 पर डे हमें ना दो, हमारे पास पैसे रिजर्व करो. अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर्टिफाइड एक्रेडिटेशन सिस्टम ही नहीं है. हम लोग ट्रेन किनको करते हैं, रेस्क्यू 1122 के बंदे सिर्फ ट्रेन है. बाकी आपके पास इवन जो डॉक्टर्स बेचारे चले जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, कोई रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं करते, कोई पढ़ाई नहीं, कोई एक्रेडिटेशन नहीं. दे शुड बी ट्रॉमा का ब्रेकअप सिस्टम वाइज लेवल्स होने चाहिए और उनकी एक्रेडिटेशन सिस्टम होना चाहिए. अब अपग्रेडेशन एक्रेडिटेशन ऑफ दीज ट्रॉमा लेवल्स शुड बी ओवरसीन बाय अ सेपरेट गवर्निंग बॉडी. प्लीज इसको हम लोग हर चीज़ हुकूमती सतह पर करते हैं, हुकूमत अपनी करेक्शंस नहीं करती. सेपरेट गवर्निंग बॉडीज होनी चाहिए जो देखें ये ट्रॉमा सेंटर बने हुए, इनकी एक्रेडिटेशन सिस्टम ये रन कैसे कर रहे हैं, इनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इनके फिगर्स को असेसमेंट करनी चाहिए. टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी मेड पार्ट एंड पार्सल इन दीज ट्रेनिंग सेंटर्स, यानी यहाँ पे कराएं. ऑल द ATLS courses which are conducted by CPSP should be conducted in these training centers, not in regional CPC. मैं इसके आप पहले ट्रॉमा लेवल सेंटर्स बनाए, मसलन DHQs को बना दें, ओहो अल्लाह खैर, लेवल 2 सेंटर बना दें, लेवल 3 बना दें, उधर जाके खाएं ATLS. ठीक है. These were the references that I quoted. Thank you very much, sir, for your time. And I am here to face anything, any question that you want to ask. You're welcome. मैं मुझसे क्या पूछेंगे, मेरे उस्ताद बैठे हैं. He is a master of trauma management and he's running these courses. Thank you very much, sir.